Go ahead, ma'am. Yeah. Good afternoon, everyone. This is Dr. Poornima Mathur, fertility consultant at Oasis Fertility Vadodara. अभी तक we've talked about different topics कि how does obesity affect our fertility, how does myomectomy and hysteroscopy, ये surgeries, how do they play a role in our fertility, what is ovarian reserve. आज हम एक बहुत ही common topic के ऊपर we're going to talk. It is IVF. Now IVF is very very common, yet it is very least understood. Everybody, a layman would say, "Acha, test tube baby." But where all is it applied? Who all can avail IVF? It is not only for infertility purpose. How does it actually help everyone? To whom all people does it offer a ray of hope? आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं IVF. Before we get into details of IVF, हमें पहले पता होना चाहिए what is a normal natural conception. उसकी फिजियोलॉजी क्या है और कैसे हमारी होती है. सो मेरे सामने यू कैन सी एन इमेज. यूट्रस है, फलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज है. नाउ हाउ डज अ नेचुरल प्रेगनेंसी अकर? लाइक एवरी मंथ जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डे ऑफ मेंसेस, आपकी ओवरीज जो है, जो आपकी गमीट्स एग बनाते हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एन एग. एक एग आपका सिलेक्ट होता है एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग. मिड साइकिल तक वो बन के रेडी हो जाता है दैट फॉलिकल, एंड इट रप्चर्स टू रिलीज द ओवम, जो हमारा फीमेल गमीट है, into the fallopian tube. उस समय if you have an unprotected intercourse with the intention of pregnancy, now this sperm will travel, वो यहाँ vagina में deposited होता है. It will travel all the way through the vagina, the cervix, uterine cavity, and वो fallopian tube में it will come and meet the egg. वो उस egg के साथ मिलके zygote या हमारा baby बनाएगा, which is then gradually through the tubes वो transport होता है, so that वो blastocyst stage तक, day 5 तक हमारे यहाँ uterine cavity में पहुँचे. All throughout आपकी बॉडी ने in anticipation of pregnancy ये यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर करके रखी है. Now if everything is fine, वो एम्ब्रियो जो है यहाँ इम्प्लांट होगा. इम्प्लांट मतलब वहाँ स्टिक होगा और वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करना शुरू करेगा. And वहाँ पे it will continue growing into a 9-month-old healthy baby, so that आप term पे deliver होके you can have a healthy pregnancy outcome. So अगर हम grossly देखें तो what all do we need for natural conception? हमारी ovaries में egg बनने चाहिए अच्छे, हमारी sperm quality अच्छी होनी चाहिए so that they can travel all the way from the vagina, the uterine cavity, वो egg से मिल सकेंगे fallopian tube. वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी फेलोपियन ट्यूब पेटेंट होनी चाहिए. दिस इज द प्लेस जहां हमारे एग और स्पर्म मीट करने वाले हैं एंड प्रेगनेंसी करने वाले हैं. लास्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज हमारी यूट्रस की लाइनिंग ठीक होनी चाहिए. इट शुड बी फेवरेबल फॉर द एम्ब्रियो कि वो वहाँ इम्प्लांट कर सके, चिपक सके एंड आगे ग्रो कर सके. इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यू नीड द हेल्प ऑफ अ फर्टिलिटी डॉक्टर टू हेल्प यू गेट प्रेग्नेंट. और व्हाट आर दी ऑप्शंस? आपने बहुत सुना होगा, हमारा OITI चल रहा है, IUI, IVF, ICSI. आर दे ऑल सिनोनिमस या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम? तो फर्स्ट हमारी बेसिक होता है कि हम आपको एग बनने, नाउ इफ देयर इज एनी, वो हम एग बनने की मेडिसिन देते हैं एंड इफ द स्पर्म पैरामीटर्स आर नॉर्मल, आप नेचुरल रिलेशनशिप रखते हो, दैट इज ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइम्ड इंटरकोर्स. नेक्स्ट हमारा आता है IUI, which is known as intrauterine insemination, in vitro fertilization, intracytoplasmic sperm injection. ये सारी डिफरेंट मोडालिटीज हैं. तो बहुत ही कॉमनली पीपल टेंड टू कंफ्यूज बिटवीन IU एंड IVF कि IUI क्या है, इज इट सेम एज IVF, क्या सक्सेस रेट्स हैं, हाउ डज इट हैपन? सो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जैसे लिटरली वो नेम सजेस्ट करता है, उसमें हम आपको मेड्स देते हैं ताकि आपका एग फॉर्म करे, एंड जस्ट व्हेन आपका एग रिलीज हो रहा है, हम आपके स्पर्म को वॉश करके, हेल्दी स्पर्म सेलेक्ट करके, दे आर प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू द यूट्राइन कैविटी. सो द ट्यूब्स हैव टू बी पेटेड. नाउ देयर फर्टिलाइजेशन अंदर बॉडी में होगा, इम्प्लांटेशन डिपेंड करेगा, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. How is it different from IVF? Now, IUI has a success rate between 15 to 30%.
IVF उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा है, वेरीज बिटवीन 60 to 80%। IVF में हम क्या करते हैं, हम आपकी ओवरीज को हाइपर स्टिमुलेट करते हैं। नाउ आपकी ओवरीज जो नेचुरली इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एग बनाती है, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस एंड मेडिसिन हम उसको मल्टीपल एग्स बनवाते हैं। नाउ व्हेन दीज एग्स आर रेडी, हम उसको रप्चर होने की जगह हम उसको बाहर विद द हेल्प ऑफ अ नीडल कलेक्ट करते हैं, एंड देन उनका फर्टिलाइजेशन हमारी लैब में होता है, एंड देन दे आर कल्चर्ड, एंड जब वो ब्लास्टोसिस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, दैट इज द एम्ब्रियो जो हम आपके यूट्राइन कैविटी में एट द राइट टाइम ट्रांसफर करते हैं, दैट इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर। नाउ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF में द फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग आउटसाइड योर बॉडी, इट इज ओनली द इम्प्लांटेशन जो हमारा अंदर उस पे इम्प्लांटेशन पे डिपेंड करता है हमारा, दैट इज ओनली लेफ्ट टू चांस। Now, what are the indications? Now, is IVF and ICSI similar? Are they synonymous? उनकी indications क्या है? तो पहले we'll broadly discuss about the indications. Now, the most important, initially IVF was designed for tubal factors. अगर हमारी tubes patent नहीं है, तो that is when natural conception totally ruled out. तो for tubal factors was the need for IVF. Apart from that, अगर moderate to severe endometriosis है, या मॉडरेट टू सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, प्रीवियस हमारे IUI फेल हो चुके हैं, हमें दोनों गेमीज की जरूरत है, या हमें कोई जेनेटिक डिजीज, ये सब हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए चाहिए तो हमें IVF की जरूरत है। अगर वी हैव टू गो फॉर सरोगेसी, दैट इज आल्सो व्हेन वी नीड IVF प्रोसीजर्स, दी ARTs। अगर पेशेंट को रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो रहे हैं, या हमारा जो यूट्रस है दैट इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर अ प्रेगनेंसी, अगर हमारा एंडोमेट्रियम मान लो ड्यू टू प्रीवियस एंडोमेट्राइटिस, TB, एशमेंस या प्रीवियस प्रोसीजर की वजह से हमारा एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं हो रहा, कोई यूट्राइन पैथोलॉजी है, या हमारी LGBTQ कम्युनिटी है, दे वांट टू वेंचर इनटू द पेरेंटहुड, या सिवियर मैटरनल मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं which rule out getting pregnant, that is when we need surrogacy and hence IVF या ICSI. Now what is the difference? Now broadly IVF and ICSI में जैसे मैंने stimulate करके the eggs are retrieved and the fertilization happens in the lab. Now ये fertilization कैसे होता है, that is IVF and ICSI, that is the difference. Now in IVF हम जो egg है, egg के साथ in a dish we leave the sperms around 50,000 to 1 lakh per egg, and then wait for them to fertilize that egg. Now ये जो था हमारे सिवियर मेल फैक्टर में वैलिड नहीं था। मान लो हमारे एजोस्पर्मिया है ऑब्स्ट्रक्टिव, हमने सर्जरी करके स्पर्म्स निकाले, वी हैव वेरी फ्यू गुड क्वालिटी स्पर्म्स, तो उनके लिए कन्वेंशनल IVF विल नॉट बी एबल टू गिव रिजल्ट्स। Hence the need of ICSI, which is widely now employed everywhere in most of the labs. उसमें हम एक सिंगल एग लेते हैं, सिंगल स्पर्म सिलेक्ट करते हैं, एंड दैट स्पर्म जो है वो डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप, but that is intracytoplasmic sperm injection, ICSI, which is routinely used. Now ये IVF और ICSI ने किन को हेल्प आउट किया है, what are the different areas जहाँ पे IVF and ICSI can help you out. Now pre-implantation genetic diagnosis for genetic disorders, अभी आपने ऑफ लेट बहुत देखा होगा, there are like different fundraisers, spinal muscular atrophy है किसी बेबी को, these organisma drug जो बहुत एक्सपेंसिव है, like 1 CR उसकी कॉस्टिंग है। Now उन पेरेंट्स को जिनको पता है हमारे फर्स्ट बेबी को की बर्थ के बाद हमें ये प्रॉब्लम हुई थी, they raise that medicine मुश्किल से, many poor हमारे जो बेबीज हैं उनको ड्रग नहीं भी मिल पाता, do they have any option? They have no difficulty conceiving, but it is कि उनका जो बेबी में जो जेनेटिक डिफेक्ट उन्हें पता है आ सकता है, कैन दे प्रिवेंट इट समहाउ? पेरेंट्स में थैलेसीमिया ट्रेट है, उनके एक बेबी को थैलेसीमिया है, या ये दे नो उनको थैलेसीमिया ट्रेट है, दे हैव अ चांस 25% भी कि बेबी को थैलेसीमिया हो सकता है, तो व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव? पहले होता था वी यूज्ड टू लेट द पेशेंट गेट प्रेग्नेंट, हम 16-18 वीक्स पे एम्नियोसेंटेसिस करते थे, एंड देन आफ्टर द एम्नियोसेंटेसिस वो बेबी के उसको प्रोडक्ट को एनालाइज करके अगर उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट आया है, एंड देन द प्रेगनेंसी यूज्ड टू बी टर्मिनेटेड। बट इस पूरे उसका दी अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल, फाइनेंशियल, द इमोशनल ट्रॉमा टू द पेशेंट वाज टू मच. It's not easy to abort a 6-month pregnancy. Hence
we have the pre-implantation genetic diagnosis. Now, if in case we have a certain chromosomal defect, certain single gene defect, जो हमें पता है it runs in our families, which is likely कि आपके आगे प्रोजेनी में हो सकता है and you don't want it. Now this PGD actually allows us कि हम embryos को टेस्ट कर सकते हैं for their chromosomal makeup. सो इन दैट केस जो सीरियस मेडिकल कंडीशन है, अगर वो क्या प्रेजेंट है एम्ब्रियो में, वी डू नॉट ट्रांसफर या वो हम आगे नहीं बढ़ाते हैं. एंड ओनली वंस जिसमें हमें पता है कि ये यूप्लॉइड और करेक्ट एम्ब्रियो है, विच इज अ हेल्दी एम्ब्रियो जिसमें आगे जेनेटिक डिफेक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वी ट्रांसफर ओनली दोज एम्ब्रियोज एंड दैट कैन इंश्योर अ हेल्दी प्रेगनेंसी टू दी couple. Now, what are the common? There are many diseases which are commonly diagnosed by PGD, but cystic fibrosis, Tay-Sachs, spinal muscular atrophy, hemophilia, sickle cell and thalassemias, Duchenne's muscular dystrophy. These are the common diseases जो हम diagnose करते हैं. Now, इसमें ऐसे ही होता है कि you have patient का IVF हमने एक सी किया. Now, जब हमारे embryos बन जाते हैं, इन embryos की हम biopsy लेते हैं. Now, after the biopsy, these embryos are frozen. And the biopsy जो है that is sent for genetic analysis. Now genetic analysis हमारे पास आती है कि which embryo has which gene defect. Now only those embryos जिसमें gene defect नहीं है, which are healthy, which are not carrying that particular disease, वो embryos हम वो transfer कर सकते हैं, which essentially removes the risk of carrying that disease forward in the progeny and ensures a healthy pregnancy. नाउ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. नाउ ये होता क्या है, अगर किसी कपल को प्रेगनेंसी लॉस होता है बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी, दैट इज अराउंड बिफोर 24 weeks, some definitions say more than 2 losses or more than 3 losses, that is known as recurrent pregnancy loss. Now we can only imagine कि the emotional trauma जो कपल के ऊपर होता है if their pregnancy is aborted recurrently. Now there can be various causes. उसमें हमारे anatomical defect हो सकते हैं, endocrinal infections हो सकते हैं. Majority 40 to 50% are unexplained, but 10-15% हमारे होते हैं genetic defects in the progeny. Now अगर आपने बाकी investigations करा लिए हैं, everything is fine, आपने पिछले pregnancy loss में आपने अपने products of conception जो pregnancy रही थी आप उसको analyze करवाते हो, see there is some genetic defect, आप पेरेंट्स की कैरियोटाइपिंग करवाते हो, इफ यू फाइंड कोई अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन है, कोई रीअरेंजमेंट है विच इज द कॉज ऑफ हमारे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, तो हाउ डू वी गो अहेड, हम उसमें क्या कर सकते हैं. नाउ इन दैट केसेस हम कर सकते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग. दैट इज हम IVF करें, एम्ब्रियोज बनाएं एंड उन एम्ब्रियोज की बायोप्सी करके वी कैन स्क्रीन जो हमारी यूप्लॉइड मतलब जिसमें हम देखते हैं कि क्रोमोसोम नंबर्स हमारा ठीक है, कोई क्रॉस डिफेक्ट नहीं है हमारा, तो वी कैन गो अहेड विद द ट्रांसफर ऑफ दोज हेल्दी यूप्लॉइड एम्ब्रियो. नाउ उससे हमारी चांसेस ऑफ अ लाइव बर्थ डेट, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कि वो पूरे 9 मंथ तक जाए, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं. ये स्पेशली हेल्पफुल है जब हमारे पेरेंट्स जो कपल है उसमें अगर अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन है. वेरियस स्टडीज हम कहते हैं कि अगर मोर देन 35 ईयर्स की एज है और आपको मोर देन 3 और मोर प्रेगनेंसी लॉसेस हो चुके हैं, तो अगर आप अबॉर्टसिस जो फीटस जो अबॉर्ट होता है उनको आप एनालाइज करोगे तो देयर चांसेस कि 70 to 80% एन्यूप्लाइड एम्ब्रियोज होंगे. यूजुअली इनमें हार्ट बीट ये सब नहीं आती है. तो दीज आर द केसेस वेयर हमारी IVF और XC with PGS can be helpful to ensure a healthy life pregnancy. Now in couples जिनको RPL due to anatomical defect है, अब say for instance there's a major uterine defect है, the uterus unicornuate with small uterus है, या फिर major septum है जो resection के बाद भी हमारा नहीं हो रहा, the uterus is not healthy, जो surgically correct नहीं हो पा रहा and which is stopping the pregnancy to go to term. Now in those cases the surrogacy can help you out. Now we take the biological child of the couple, that is आपके eggs, आपके sperms, आपका baby. It's only renting a uterus for 9 months and that can actually help you get a healthy pregnancy at 9 months gestation.
Now, the LGBTQ community, the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer community. Now, we have to offer fertility options. Now, if हमारे friends they decide they want to go ahead with pregnancy, they want to have start a family of their own, how do we help them? So we have various fertility options हमारे. So if we have a lesbian couple, so उसमें you have a uterus and ovary. तो with the help of donor sperms, आप या तो IUI या IVF की help से you can achieve pregnancy. For gay couples, we need donor eggs and surrogacy. Now, as per the Indian ART law, अभी जो नया हमारा हुआ है, single woman is allowed to have ART pregnancy, but abhi single men are not allowed. But I hope soon we'll have new amendments and everybody can actually realize their dream of starting a family. But whatever the case is, as fertility consultants, we are always there to help you out and guide you through your journey of pregnancy. Now, one of the most raging topic is fertility preservation. Now, what is fertility preservation? हमने इतना सोचा हुआ है, सुना हुआ है इसके बारे में. Of late, we know the number of cancer cases are increasing, but उसके साथ उसका treatment is improving. The हमारी the survival rate is much significantly better as what it used to be 5-10 years earlier, and so is now we have to focus on the quality of life for our patients, though they have already battled cancer. Now, the minimum that we can do to improve their quality of life or to help them out is fertility preservation. Now, onco-fertility preservation can be offered दोनों men and women दोनों को. If a cancer is diagnosed and if we have time before the initiation of chemotherapy or radiotherapy, for males, semen can be cryopreserved and it can be kept till indefinite time. For women, for young girls who are prepubertal, ovarian tissue cryopreservation is possible. For postpubertal women, हम oocytes cryopreserve कर सकते हैं. We have various stimulation protocols so that at any point of time during this fertility preservation, उनका onco treatment जो है that is not delayed or affected. We have safe drugs, options and approaches which will help you preserve your fertility along with not compromising आपका cancer treatment. If in case you're married and you want to preserve, you can preserve your embryos also. So we have all the options available. Sperm preservation करना है, oocyte करना है, ovarian tissue करना है, embryo करना है. Now, once you are free from your disease, once आपकी remission आ गई है, you feel you're healthy enough to start your pregnancy, आप अपने frozen gametes use करके you can start with the pregnancy either self or if in case there's been a surgery, surrogacy, whatever it is, we are always there to help you out with that. Now, the other raging topic is social freezing for women. Now, women are always under pressure, societal pressure, more so in India, कि हमें हमारी family life timely start करनी है. You have all the unwanted advices from all the aunts and everyone. You're touching 30, आपने pregnancy plan करना है, ये सब करना है. Does it mean we have to compromise our career, put it at stake? No, it's not. Women also have the liberty to pursue their career, but at the same time, we don't want you to compromise your family planning as well. So in those cases, अगर आप childbearing age के हो, you're sure you're not going to plan pregnancy for the next 5-10 years, but or you don't want to plan pregnancy as of now. You've not thought about it. So we can do what? We can preserve your eggs. So in that case, आप जब healthy हो, under 30-35 हो, you can take the meds, get your oocytes and preserve them for whatever time you want. It can be preserved indefinitely. Now, if 15 years later you say, now I want to start my pregnancy, तो कि आप अपने frozen oocytes use कर सकते हो, which would be definitely having a better quality, better number as compared to what you would be having at the age of 40, 45 or 50. If 20-30 years की eggs जो हमारे healthy होते हैं. So when social freezing gives you the liberty to pursue your dreams at your wish and your will without being managed by the society. So, and next is a very infrequently discussed topic. We like यहाँ पे बहुत से लोग हैं uterine anomalies होती है, जैसे uterus में there is a defect जिसकी वजह से people find it very difficult getting pregnant. Now this MRKH syndrome itself is like seen in 1 in 2004 or 4,000 women.
very commonly seen in our gynec practice. So इसमें the lady is normal, the ovaries are normal, but हमारे tubes and uterus नहीं होते. Now ऐसे ही अलग अलग हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं. से फॉर इंस्टेंस there's rudimentary हमारा यूट्रस है, स्मॉल हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है हमारा. Now can those patients conceive? How can they realize their dream of getting pregnant? If in case there's a major uterine anomaly which जिसकी वजह से आप pregnancy नहीं plan कर रहे हो, तो you using your gummies you can get an embryo made, and with the help of surrogacy, say, you can realize your dream of starting the family. So these are all the different treatments that are available at our various services fertility centers, which can actually help you out. Whatever is your query, अगर आपको कोई भी doubt है, any की this, if it is a recurrent abortion, like can I ever get pregnant, I want to preserve, walk into us, talk to us, contact us with the latest cutting edge technology, science, advances in science. We'll try to help you realize your dream, whatever you want to achieve. Now, ovulation induction, IUI, IVF, donor gametes का treatment, minimally invasive surgeries, fertility preservation, pre-implantation genetic screening, diagnosis, freezing or vitrification of your gametes, in vitro maturation of oocytes, endometrial receptivity assays, ovarian rejuvenation for patients into ovarian reserve, come hand they want the self. These are all the various modalities that are available at Oasis, and we would love to help you out with all your queries and your future family planning. So this is Oasis Fertility, hoping you all a positive, a healthy planning for you, healthy life for you. Thank you. Okay. Now, we have a few questions. Like, is hysteroscope necessary to examine if first attempt IVF is failed, or we can go for next cycle too without hysteroscopy? So, Ms. Rupa, it is. It actually depends. आपकी last IVF cycle क्या थी? What was the quality of endometrium? Is your fertility doctor anticipating कोई uterine pathology? If your endometrium was very good, you had a good blast, hysteroscope is not mandatory. It is only when your fertility doctor feels it is necessary, only then we have to go for hysteroscopy. There are other methods also, that whichever your fertility doctor feels is necessary in your particular case. We have endometrial receptivity assay to know what was the cause. First, we have to find out what was the cause for the first IVF attempt failure. Was it your endometrium? Was it your gametes? Or was it your receptivity? And accordingly, we can finalize the next course of action. What is couple karyotyping? Now, karyotyping is basically हम आपकी genetic study देखते हैं. कई बार हमारे में जरूरी नहीं, if we are looking physically normal and everything, there can be few unbalanced translocations, few gene micro deletions जो आपके fertility outcome को affect कर सकते हैं. No, couple karyotyping per se is we do a genetic analysis कि आपके क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स, आपका जो क्रोमोसोमल इंफॉर्मेशन जो है, जो आपकी कोडिंग है, वो ठीक है कि नहीं है. तो when indicated, say for instance, अगर आपके husband के में भी there is a semen parameter में कोई gross defect है, severe oligo है, where we have to go for YQ microdeletion, और recurrent abortions है जिसमें we are expecting unbalanced translocations, we go for karyotyping. That is आपके और आपके husband की karyotyping हम करके देखेंगे, so that we know how to proceed further in case there is any problem detected. What are the fertility preservation options for women diagnosed with cancer? So there are various fertility preservation options available for women. जैसे I spoke in my presentation कि अगर they are young prepubertal women, तो उनमें हम ovarian cryo tissue preservation कर सकते हैं, which can later on transpositioned to a better area where it is not exposed to the chemotherapy or radiotherapy, and can actually take care of the hormonal status also of the women. The other one is using different protocols. We have dual-stim protocols, which जिससे हम without affecting your cancer treatment, हम आपके oocytes cryo preserve करके रख सकते हैं, and they can be used further for fertility treatment. The fertility preservation cost for males
it is very less, somewhere around 6,000 per annum. Or for females, if you have oocyte cryopreservation, it must be around 80,000. Yes, IVF is possible for obese patients. हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था हाउ डज वेट एंड ये सब अफेक्ट. IVF इज डेफिनेटली पॉसिबल फॉर ओबीज पेशेंट्स. गोनाडोट्रोपिन में भी आपके जो इंजेक्शंस की डोज थोड़ी सी ज्यादा यूज पड़े, बट डेफिनेटली इफ यू आर ओबीज एंड यू वांट टू गो फॉर IVF, you can definitely 100% it is possible for you. How long does IVF take to make one pregnant? So इट इज यूजुअली 2 month अफेयर. अगर हम वो लेते हैं तो फर्स्ट साइकिल में हम आपकी यूजुअली एग ओवरीज को स्टिमुलेट करके आपका oocyte रिट्रीवल करके आपके एम्ब्रियोज बनाते हैं. एंड इफ वी गो फॉर अ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इन योर नेक्स्ट साइकिल आपका यूट्रस प्रिपेयर करके हम उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं. तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ वी हैव द रिजल्ट्स ऑफ योर IVF प्रेगनेंसी. On which day of period IVF is done. Usually हम IVF की जो stimulation है that is started from the second day, but it is best advised कि आप अपने fertility doctor को before your second day एक बार आके मिलिए, so that he or she can examine you, conduct आपके various blood tests, see your fitness for the IVF procedure, your hormonal levels, and then from the next cycle you can start with your IVF treatment. I guess that's it. Thank you so much, everyone. Okay, thank you. If in case you have any query, please feel free to contact us at Oasis Fertility Helpline. We'll be more than happy to help.